Okay, so let's go for a group task, and that is for IOCL, and this is the actual IOCL topic which was given. So we are going to discuss the actual topic in asked in IOCL recently. So let me give you the topic. So you have to suggest, as a group, you have to suggest me some points. How shall you convince the customer to purchase e-vehicle? How shall you convince customers to go for e-vehicles? Now we have to slowly shift to e-vehicles. So you have to, at the end, as a group, give me some points so that they shift over to e-vehicles. Group task or group GD? Sir, is it group task or GD? It's a group task only. How shall you convince a customer to go for e-vehicles, to purchase e-vehicles? आपने मेरे को पॉइंट्स देने हैं एज अ ग्रुप. 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ. क्या क्या पॉइंट्स आप एज अ ग्रुप दोगे, सोचो, फिर मैं टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ. Okay, let me tell those who joined late about the task which is there. This is a group task which I am giving you. And the task is, how shall you convince the customer to go for e-vehicles? We want them to go for e-vehicles. So how shall you convince the customer to go for e-vehicles? Now listen carefully, this is a group task. We have taken a big size group here because of, this is the last GT. So we do not have time limit, we can go for long. I'm going to give you more time for this task. Make sure you are not cutting each other, that is not required. Group task में तुम्हें एक दूसरे को कट नहीं करना है, तब तक कंक्लूड नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलूंगा. तुम अपना बोलते जाना है, तुम अपना बोलोगे, पॉइंट्स बताओगे, मार्क्स मिलेंगे जिस ढंग से तुम अपने पॉइंट्स बताओगे, द वे यू स्पीक. रेलिवेंस ऑफ द पॉइंट, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने क्या काम की बात बोली. बाकी तुम जितना मर्जी बोलो, काम की बात नोट हो जाएगी, मार्क्स आपको उसी का मिलेगा. लिसन टू अदर्स वेरी अटेंटिवली and you may correct somebody, you may make the consensus and try to make the consensus simultaneously. साथ साथ आप माना, so that at the end when you conclude, one of you conclude, then all the points are provided. So the topic is, how will you convince the customer for purchasing the e-vehicles or going for the e-vehicles? That is a need of the hour. Now I open the house for the discussion among all of you. Please start it now. Good evening, everyone. Good evening, I am very My happy. name is Anand, and I'm glad that I got the opportunity to start the group discussion. Friends, the topic given to us for the group discussion, for the group task is how to convince the customers to go for the e-vehicles. So, friends, I think that e-vehicles should be promoted in 3 stages.
First stage is that individual level, second one is community level, and third one is national level. So friends, I think that we should also say the advantages and disadvantages of e-vehicles. Mostly we should prefer to say the advantages of e-vehicles. So in order to promote e-vehicles and declining the petrol vehicles. So I friends, want to add on. I open the house for the discussion. So friends, continue. I want to Okay, add on thank this you. point that Thanks, bro. you have I want. discussed about the national level. It should be a social level, right? Like it can be divided into two parts: at a social level and at a personal level. How it affected EVs to them. Like at the social level, we can tell them that how it will emit less CO2 and all SOx, NOx emission will be less if we'll be using EVs. And at the personal level, we can tell them that the engine life will be more and reduces the cost of the fuel, and it lowers maintenance costs, and it lowers that conversion cost also. First of I all, would like I to would add one like more to point introduce to. I would like to add one more point about EV that attracts the lower price GST of than the oil price. EV attracts lower GST than normal IC engine car. Apart from that, per kilometer running cost is also very low. And what my friend told, that it is also environment friendly. And as we are progressively moving towards the a new platform, so EV Good is point. future. Good point. So Good point. so I want to Good regarding point. so regarding resale value will be Soham also say more. good point. I want to I add. I want I to want add to one more point point how to that convince So customer. So first I of all, want to add one more point that rechargeable system government has apply. taken the Please. government has taken a major step towards the e-vehicles. The step is that the person who is buying the e-vehicles should be given a compensation of 1.5 lakh. So for example, if you buying a vehicle of 10 lakhs, so it will cost you 8.5 lakhs as apart from that, government is GST giving is also Apart low. from GST is also low. yeah, friends, that is so Tushar true. said a good As point. you Yeah, already Tushar said. said good So point. I want to I add. will try to. Yeah, I want to Yeah. add one point. How The to price convince of oil. customer? How to convince customer? First, rechargeable system apply. Second, EMI also provided. Third is rechargeable pump is also. Fourth is no pollution. So fifth point is like any corner point where documents checking. So no pollution, then no like pollution type of document checking. Guys, Sixth point is less cost like a petrol I type. think we should go one by one rather Less than making it maintenance. a card. guys, Go one by one. Friends, we nobody is should hearing take it anyone. Please. take it in a approach that we should first convince a passenger vehicle, then we should go for commercial vehicle for so that because passenger vehicle segment is less and commercial segment is very high. So apart from in commercial segment, we can reduce the logistic cost drastically. And few days before, we have seen that Prime Minister Modi has announced our logistic policy. So Good the, point. so and we can drastically reduce the logistic cost, and and it eventually benefits the end user. और As my friend मैं has already एग्जांपल से said. बताना चाहता हूँ एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में ज्यादातर पोल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो Guys, जाता है can जिसके we कारण go one by पोल्यूशन बहुत ज्यादा one इंक्रीज rather हो जाएगा than ई creating a व्हीकल chaos? होगा ई व्हीकल होगा तो वहाँ पे अगर दिल्ली में रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि अगर हम पेट्रोल और केरोसिन टाइप का यूज कर रहे हैं तो सल्फर का लेवल और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर और जहां मैंने अगर दिल्ली जैसा जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है I think we should कंडीशन give chance to Shivangi to speak. I think we should give chance Shivangi to speak up. Thank you so much for giving me the chance. So basically, government has already taken steps to promote electric vehicles, which means it is going to be a booming in coming future and expected by individuals to buy electric vehicles as well. So for longer run, we can pitch the customers to buy electric vehicles. Apart from that, we can also convince on the benefits coming from electric vehicles. For example, less
less carbon emissions, and it works on renewable source, and also there are multiple charging stations as well. So which means Adding to it your is point, coming. Shivangi, that Yeah. Yes, the I want to government has add one more already point. installed 2,000 Yeah. electric charging point, and Yeah. in the upcoming year they will going to set 10,000 electric charging point in the Yes. coming So years. yeah. Or So we we can Add use one the more I point would like to add to one what more point. I would add one more point customer to I would discuss they that have like also the that planning same currently you have seen and we the must clear all currently that you have seen the what safety we standards 5 lakh are crore being by used the and end of how the 2030. electric vehicles are more safe, current and I want to how add they one are more point cheaper. to the We need to Rishika's understand point the is that customer currently you psychology. have seen the PSU such as I IOCL. think So IOCL I think IOCL has good point. Tushar said good I point, but I want to add IOCL one point. When IOCL has electrical vehicle are currently used, then IOCL it is has a renewable of electrical traffics. Like you can also chargeable and rechargeable. Then you can know about that. And also government funding are available, and also free parking and no pollution like carbon monoxide and this type to how increase Guys, the जो pollution. customer I think want Guys, to I I want think we to are add repeating the I'll same talk about point. We are repeating the same point, I guess. So who I is going want to make the I points think add one one by more one? point think to Let's build a I want to add consensus one more till point to now that Rishika's what गाइस point we is have कस्टमर that की जो discussed. सबसे बड़ी currently प्रॉब्लम I होती है think वो है for कि ये हाई I चार्जिंग think और टाइम लगता है इसमें बैटरी को चार्ज करने में, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, तो उसके लिए भी yes, exactly. yes. There is चार्जिंग more करने में room to चार्जिंग करने में टाइम लगता है, लेकिन ये होता है कि आप अगर नाइट के टाइम में चार्ज कर सकते हो, मॉर्निंग से इवनिंग तक यूज कर सकते हैं। ऊपर है कि आपको पेट्रोल ये भी डीजल गवर्नमेंट का का भी कॉस्ट नहीं लग सकता है, yes, तो there is ये भी more है एक room for मिडिल फैमिली के लिए। innovation and there is more room for innovation and जो कि मयंक बोले हैं और according to ऋषिका a बोली है customer, I would like to add उसमें more ऐड one करना है point. there is currently more जो room हमारा for innovation and कस्टमर के Price बेनिफिट rise के लिए तो हम उसे perspective for बेनिफिट्स तो innovation बताने ही वाले हैं, एनर्जी के बट साथ जो कमियां तो हैं इंडियन अगर हम ऑयल उसको भी एनर्जी वो फुलफिल कर देते हैं तो क्या होगा कि इससे हम सेल्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को कन्विंस होंगे। Adding to your point, हाँ एज अ कस्टमर होते हैं और generating a lithium-ion battery is itself a great challenge for us. I want to add I want to add one yeah, more point to Rishika's point I is would that like to say that I want to add one more point to Rishika's point is Adani- that currently you have seen the PSU such as IOCL. IOCL has merged with collaboration with Finergy that and point is formed already and discussed. formed NTPC and Indian I Oil would like to add one Energy more Oil. point. Let Tushar speak now. IOCL is basically work on wind energy or solar energy, No, so I want to- capable I to want to capacity add of one more Let point him that 240 complete, please. megawatt every day. I am not saying. I am saying that currently IOCL has collaborated with a Israel company known as Finergy, and it has Yes. formed Indian Oil Finergy Private Limited. And in that, what they are doing, that they are setting up the aluminum air aluminum air energy. yes, and in that it has been said that if you recharge for 1 day, means if you give the power plug for 6 hours, it will be recharged up to 2 days or 3 days. Means I think that it would save a lot of petrol, means save a lot a lot of money in yes, by yes, yes. wasting in They have recently apart from कस्टमर को कैसे फायदा है, कस्टमर कैसे सोच exactly हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ट्राई करना है, तो इसके अगर लिए हम हम एक लोग डेटा की इसको बात करें तो अराउंड 70,000 इंडिया में पेट्रोल डीजल स्टेशन है और अभी अराउंड 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन है, तो करीब करीब 5 से 10 किलोमीटर पर एक पेट्रोल डीजल स्टेशन आता है। लेकिन अगर हम जब चार्जिंग पॉइंट की बात करते हैं तो लेट्स से कि अगर 500 किलोमीटर भी डिस्टेंस चलता है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसके बाद फॉर सपोज कोई नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो उसके लिए तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। Yes, so we should decide the next of the charging stations R&D and Public said good innovation point, but technology as Mayank said, by automotive power company point or more rechargeable power point to find like अगर पेट्रोल so that will तो वहाँ पे हम I think that power electrical so that will rechargeable generate more income, so that will be a passively guys, I think we should let Pawan speak. Thank you so much, Rishika. Thank you so much. Yeah, so as Mayank mentioned, we can't actually like 100 kilometers if someone is traveling from north to south. If the vehicle he had to
has to wait for a lot of time if it has to get recharged. So I think something like portable, like if we can take out that battery and give it to the station, yes, keep it, that will be a best solution. Like yes, definitely इसके रिगार्डिंग भी अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जून में एक ड्राफ्ट लॉन्च किया था बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, और जिसे बजट 2022 में भी मेंशन किया गया था। तो एक बजट 2020, लेकिन वो इतना फिजिबल भी नहीं हो पाता जैसे यूएस में टेस्ला ने करके देखा था, क्योंकि लेट्स से कि अगर किसी की कोई कार है तो अगर कार का कोई कंपोनेंट अलग होकर मींस अपने से अलग कर रहा है तो इतनी ज्यादा जो भी ओनिंग टेंडेंसी होती है, तो एक हम बोल सकते हैं कि mentality ऐसी होती है। I think like we have to keep that multiples, like what we call now, let's say like chargers, like कॉस्ट की एक इशू रहता है ई व्हीकल्स के साथ, तो उसके लिए हम कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, जैसे कि किस But why to tell the drawbacks of EVs? Exactly. So didn't have told that. We I have think to like we have to discuss the drawbacks as well. We have to discuss about drawbacks, क्योंकि अगर हम drawbacks पे काम नहीं करेंगे तो कस्टमर को मोटिवेट he will highlight the drawbacks. अगर हम कस्टमर को ड्रॉबैक के बारे में बताएंगे तो ये हो जाएगा ई-व्हीकल के साइड क्यों we have to highlight the right side of the e-vehicle, because मुझे लगता है कि do not highlight the कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश है of the e-vehicle, then it will be not beneficiary or conducive to customer, so that he It can will reduce the number of customers. I convince guess it will tell the all the customer to go for disadvantages. One e-vehicle. or two disadvantages is good, but not all the advantages we can see. I think that this is not the See now, everybody is speaking parallelly. Please clear one speak so that we can understand what somebody is important to talk about the drawbacks. Also, they can electric charging vehicles, because government is already शिवानी says good point, but I want to add one point. हमें कस्टमर को कन्विंस करना है, हमें उन्हें ये नहीं बताना कि उसमें कमी क्या है, तो कन्विंस करने के लिए अगर हमें अगर पेट्रोल पंप है तो हमें सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं कि अगर हर पेट्रोल पंप के पास अगर सोलर और रिचार्जेबल सिस्टम हो, क्योंकि अगर रिचार्जेबल करने के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं होगा, कस्टमर गवर्नमेंट के साइड से ज्यादा उसमें ज्यादा माने पैसा लगेगा नहीं, We can tell them it is cost effective. It is cost effective. We can tell them. Another point is the cost effective. But we have to we should note down the point. The task is to overcome the drawbacks. And घर पे चार्ज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी अवेयर करना चाहिए। जो भी I think that I want to add one more point, that in we very can small distance as well, like in every 3 kilometer grid there is a possibility of getting charging stations, because their policy is to apply these stations in the petrol pumps only. So basically this is one of the policies. So there is also a point I think मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि अगर ई व्हीकल का यूज होगा तो रनिंग कॉस्ट बहुत लेस हो सकता है, रनिंग कॉस्ट बहुत लेस होता है, जीएसटी लेस होता है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी लेस होता है, और ट्रैफिक पे इकोनॉमिकली इट इज very much better than the petrol. Let me give a value. And environmentally also, how can you save money? Because the insurance is a good point, I think so. Yes. Definitely अगर मुझे लगता है ई व्हीकल के साइड हम जा रहे हैं तो मोस्टली हमें पोल्यूशन के साइड ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ई व्हीकल लाने का पर्पस यही है, एक है कि पोल्यूशन प्लांट को इफेक्ट नहीं करे, दूसरा लोगों को अति नहीं इफेक्ट करे। भाई ई व्हीकल लाने का एक तो पोल्यूशन रोकना है और अपनी डिक्रीज करना है। Apart from that, एक्चुअली हमें पॉइंट्स नोट करना चाहिए। there is more room for innovation for original equipment manufacturer like Maruti and okay, I got it. Please make a consensus till this point so that we can divide it into two parts, like social level and at the personal level, how EVs are benefiting us. So at the social level, we told that it emits less CO2 emissions, and engine life will be more. Engine life will be more if we are
using EVs, electric vehicles, and it reduces fuel cost also, and it has a prolonged life of an engine, and it has a lower maintenance You can also cost. say smooth running also. And Smooth running. any other points I'm missing, guys? The social per level. kilometer running cost also very low. After all, India की economy and like they must feel that they are contributing in the nations. So that is what a factor Yes. they can see. करना है कि अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे According to this point, I would like अभी to add अभी that many अभी आप car लोग हाल companies फिलहाल like देखे Tata होंगे कि and जैसे कि अभी हाल फिलहाल आप लोग देखे होंगे कि जैसे शार्क टैंक में एक ओटुआ करके कंपनी आई थी, वो की पूरा बेस्ड है ई व्हीकल्स पे बेस्ड है, जो कि सो अगर अगर हम लोग का जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो प्रमोट करे ई व्हीकल्स की कंपनी को, तो आई थिंक दैट जो बड़ी बड़ी ऑयल की कंपनी है वो सब शायद मर्ज करके और ये ई व्हीकल्स को प्रमोट करे, और जब ये बड़ी कंपनीज प्रमोट करेंगे ई व्हीकल्स को, तो आई थिंक दैट people will get easily convinced by seeing the brands of the big companies, and they I think will your watch the point is advertising. promotion by the oil companies, I guess. Yeah. Promotion by the oil We are companies. not here to No, promote not promoting the If EV, if the big companies will promote na, so I think So, that yeah, people will get easily convinced. You see Yeah. that, for example, I am saying, for example, you see that if you are going for to buy a salt, you will easily take the Tata salt, but Yeah. but if it will be local salt, then you will think twice or thrice that whether we So should buy or according to whether we should. you, the brand matters. advertisement. So the brand Yes, True, yes, but It because matters. brand is actually Advertisement, what brand. is a trust. Yes. we can So I use am the saying made that in only. India और कंपनी के साथ साथ और अगर मुझे we लगता है can कि go Green with India celebrity advertising or Yes. anything that I accept, also no. increases the sales. I या accept with ये what increase Tushar sales has भाई actually मुझे can मुझे लगता है कि जरूरत इसको नहीं होगी मेरे अगर ख्याल से। सेलिब्रिटी के साथ साथ प्लेयर हो जाए और हाँ। कोई भी फील्ड का हाँ या क्रिकेट कोई से लेके हाँ क्रिकेट वो अगर हाँ सेलिब्रेट करे और इसके बारे में बेनिफिट बताए तो मुझे लगता है I कस्टमर think- ज्यादा उसके बाद आएगा। और तो मुझे ऐसे भी ये लगता इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें एक बार और क्या मुझे लगता है करना बिजनेस है, पर्पस जो what- अगर आपको शॉर्ट मैं टाइम अभी बिजनेस है convention उसमें में कुछ रनिंग सोचना कॉस्ट बहुत कम लगता है क्योंकि आप बार बार आना जाना है, इसमें आपको पेट्रोल डीजल को So, अगर लॉन्ग टाइम के लिए Yeah. आपको चार्जेबल खोजना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आपको ज्यादा चार्जेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसा कि आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला what था I कि ये accept चार्ज with what पे actually 350 Tushar has किलोमीटर जा said. सकता है। So it was very interesting point. Like if we promote from a Tata point of view, suppose we go to a Tata showroom to buy some Tata car, there the salesperson can actually promote the e-vehicles. Yeah. Collaborate with something like that brand. It's not a brand. It's about the trust. We trust Tata more than any other brands. We trust Honda. We tend to take less risk when compared to other companies. Like when someone like you and me come and keep a company, nobody actually gets convinced to buy it. But when it comes to Tata, yes, it is a very good one. It will definitely release a good It's a product. very good point. Established players हैं, उनको एक बार advertisement के yes. Apart brand from name apart from this, we name can say about matters. that कि Apart from we can use the basic- made in India tag in Yeah. the Made in India project by our Yeah. honorable Make Yes. in India project also we benefited Or- from that. Yes, or we can give them free demos or free vehicle services extras, or we can extend the warranty of the vehicle so that they We can use it also we can Yeah, also already actually giving so the we can- incentives of buying the EVs. और मुझे लगता है ये like गवर्नमेंट के थ्रू GST, ऑलरेडी आई yeah. थिंक इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो भी व्हीकल्स लेते हैं, तो उनको अराउंड हाँ। कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा जीएसटी Yes, पर yes. कुछ रिबेट Yes, मिलती yes. है। we can also make the good point. registration. Mank We said can good also point, make but the registration process and that और registration all the process cost जो है वो हाँ yes yes Registration cost is already low for the EV. No, it's not about Yes, the yes. cost, it's about the process to Registration be cost is already sophisticated. low for the EV. No, Yeah, so we process I'm can- telling you about the We are registration repeating the same process. thing It again has and to become more अगर ये व्हीकल हम लोग प्रमोट करना Easy. चाहते हैं, लेकिन ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट कहाँ से कर सकते हैं, जैसे सोलर से हो गया, नहीं, बैटरी वो हो गया, अभी कोई नहीं है। इस पोजीशन को भी देखना पड़ेगा We already discussed. मेरे को और I एल्सो want to विलेज add- साइड का भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि विलेज साइड में अगर इलेक्ट्रिसिटी बेट अगर भाई, बिजली हमें सोलर से विलेज साइड हर जगह इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, हर जगह I इलेक्ट्रिसिटी जा want चुकी है। to You don't know I think want to about add that. one more point. Apart from that, we can give them a That lucrative offer in extending service or extending warranty so that they can feel much more assured to and go for EV.
that can be also a proposition for. I would I also think. like to add that e-vehicles are more user friendly, like it is more comfortable in driving as compared to Yes, conventional fuel vehicles. yes. So it Actually, will have actually, less they voice. don't And They have are one more not point, actually Yes, user Shivangi, friendly. I think They are that right now. the system which electric vehicle is providing is different from the common cars we are using it. So we should provide the demos also to them that how to drive EVs and all. Yeah, इसके अलावा I had faced this problem actually as an electric vehicle user. I had faced this problem. So we don't actually get that sound like what we actually get on IC engine. So we get that sound. Yeah, so like what we actually noise assume is pollution are the very vehicle is not. yeah. but the acceleration is also very smooth in rather than IC engine. That's why I saying That that is the there is some smooth running process. Exactly, Also, smooth running process and smooth I am talking about the transport system, minister ने guys. बोला था That कि the system is totally different than our normal conventional cars. This I am can not be talking about like the acceleration. light consuming is hitting the acceleration. like So we they provide are using some. like but women can एंड मुझे भी लगता है कि I think that रिसाइकल I want प्रोसेस भी to हो add सकता है one more लाइक thing अगर to that लिथियम बैटरी instead का of यूज कर रहे हैं तो रिसाइकल हो सकता है हमें हमारे ज्यादा लाइक I होता है want पेट्रोल to डीजल जो कन्वर्ट होता है SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड दिस टाइप, लेकिन रिटर्न नहीं आता है, रिसाइकल नहीं होता, लेकिन लिथियम बैटरी को हम फिर से दोबारा रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं, तो हमें पोल्यूशन और सराउंडिंग को कंट्रोलिंग में रख सकता है. The waste will be more, will be why less would generated. the customer care about कि कहाँ emission जा रहा है? He will care about कि उसे क्या फायदा है? He will care about Yes, definitely. मेरे को ड्राइवर्स point को add आसानी करना हो रही जीत है, के point और से मुझे चलाने में अगर तेज हम माइलेज है, ज्यादा माइलेज है. लिथियम आयन बैटरी को अगर हम लोग चेंज कर ले हाइड्रोजन आयन बैटरी पे, so I think that it would be more beneficial because lithium ion battery में जो But it's not an e-vehicle. जो हम लोग को That distance is cover like मिलता है It's not, होता that's है. not a point और add e-vehicle, करना चाहता हूँ. it's a hydrogen car, that's not If e-vehicle. we That's use hydrogen. hydrogen, it's Providing. not I going think, to be an for example, e-vehicle. Yeah, hydrogen is e-vehicles have more beneficial for prediction of व्हीकल में आई petrol थिंक हाइड्रोजन यूज नहीं की जाती, वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड capacities that होती है आई vehicles थिंक. are हाँ, getting. That's let's और हाइड्रोजन अगर हमें ये बहुत दिखाना कॉस्टली है होती है, अगर प्रॉब्लम हाइड्रोजन यूज our नहीं कर our सकते. vehicles are safe like hydrogen is as you have different seen e-vehicle is पहले different इतने मुझे ये दुर्घटना लगता है हुई. कि व्हीकल के लिए These हमें are safe, these are reliable. हमें Yeah, e-vehicles are more Yeah. automatic, so less effort required, and actually they are more safe for drivers. So we अगर can say e-vehicle और हम क्या इसकी हैंडलिंग जो है ना वो भी काफी आसान होती है. अगर जैसे अगर किसी को अगर न्यूली ड्राइव करना सीखना हो या ये तो हैंडलिंग काफी इजी है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है. मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है. तो So I think we have discussed all the points like what are the Acceleration points यहाँ पे कम है. like less. पर्सनल लेवल पे हमने आई थिंक एक बार रिपीट कर दो प्लीज. Like Ritika, it you is make the like, consensus again. yeah, like it emit less CO2 and it has it reduces fuel cost and it lowers maintenance cost and it has a lower conversion cost also, and low it has running cost है, per running cost is also less, very low, and lower GST. Yeah, low lower GST और and registration cost is also lower less. Registration lower cost is also insurance. less. Yeah, lower गवर्नमेंट insurance. इंसेंटिव और जैसे गवर्नमेंट और हम इंसेंटिव व्हीकल को अगर प्रोवाइड पेट्रोल किए डीजल जाते यूज करते हैं तो हमें हर रोड पे चेकिंग होता है, तो ज्यादा चेकिंग होना ऊपर से उसको डॉक्यूमेंट्स पोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स देखना ये वो बहुत चीज होता है, लेकिन इसमें कोई चेकिंग नहीं होता. अगर आपको ई व्हीकल यूज कर रहे हैं तो चेकिंग भी कम है, आपको कम ट्रैवल परेशानी कम किया जाएगा. Because it doesn't और provide any मुझे pollution, एक पॉइंट that's बहुत why. इंपॉर्टेंट ये लगता है, मुझे एक पॉइंट ये लगता गवर्नमेंट है इंसेंटिव भी ऐड कर सकते हैं पर्सनल लेवल. और मुझे battery cycle is also more like if you take even a full tank, it just goes from some 200 to 300 kilometers because the range is very low. But when we use a battery, we can get up to like 500 to 600 kilometers. Right now, we can get up to 500 to 600. Good mileage. और कस्टमर का हमें उसके Also- एफिशिएंसी के बारे में बताना चाहिए कि आपको इतना घंटा या इतना टाइम के बाद ये रिचार्ज होगा, और रिचार्ज Yeah. आपको शो करेगा, आपको ये करेगा Yes. 50%, 30%, Point that आप उसको it is कंडीशन को समझ सकते more हैं. आपके comfortable साथ with driving या and all, because why a user will buy if it's easy for him to drive. Yeah. So if it's more comfortable, it's more life saving, like driving and it's indicating okay
it's automatically indicating something is but coming. actually this Swagi, I reminds want to me a know how it case. is life Yeah, but saving. I want to add one point. I want to add one point. अगर ई व्हीकल का यूज कस्टमर को ज्यादा रिक्वायरमेंट को देख के करना चाहे तो मे भी सोलर सिस्टम उसके गाड़ी के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिससे अगर उसी के रिक्वायरमेंट जो पोस्ट में अगर व्हीकल खरीदा है उससे ज्यादा We are diverting from the point. we are Diverting from the point. We should be focusing. We have on to convince the customer how also. to Yes, customer को convince. Guys, customer अगर yes. पॉसिबल हो सकता है सोलर, अगर सोलर बैटरी का तो कीमत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होता है जो लाइट के साथ सेलर्स वी आर नॉट रिसर्च एंड डेवलपर्स जो हम ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वी आर नॉट रिसर्च एंड डेवलपर्स, तो हम सही करने वाले हैं, तो ये R&D के काम है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। I think we are in a marketing side and we are just have to market the yes. We have just to sell the vehicle and all. I would like to add a point. So like yes, recently, so like so people usually are getting feared because recently the Ola bike has failed badly. So what we have to do is like we have to show them like we have the high like whatever high level testing has been done, we have to prove them, so to convince them that there will not be any fire accidents. We should like say suppose during summers these accidents have happened, so from 48 degrees 47 degrees that we will be there, we should convince them that we have actually run the test at 60 degrees Celsius until it's working very good. So or we can show them that certificate assurance safety हमें provide करनी पड़ेगी कस्टमर को. we have to promote it by showing some videos. करने के लिए मुझे एक पॉइंट और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर डबल बैटरी सिस्टम भी कर सकते हैं, अगर डबल बैटरी सिस्टम प्रोवाइडेड हो हर व्हीकल में, एक स्टोर में रखा हुआ हो तो चेंज करके कर सकते हैं. I would like to add one point about this. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर दो बैटरी अगर उसके पास है और दोनों चार्जेबल है तो चार्ज डबल बैटरी कर सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं तो. We can also say that government is actively promoting this, so in coming future it will be highly in demand. So when a person buys that, he thinks of a long run perspective, so we can think say government का plan बता सकते हैं. I would like to add one more point over here that lithium-ion battery has a temperature range of minus 40 degree to minus 60 degree to minus 20 degree to minus 40 degree. Okay, so whenever the temperature rises about that temperature, so the means it has a possibility that it has a tendency that it can catch fire. So we should be thinking about replacing this because lithium is also a very rare kind of mineral. So with this is being done over here in Adani is doing making a mega project on Gujarat, so we should promote that thing because I think so he is promoting aluminium ion battery or something like that, which has a greater range of temperature, which will make the EV safer. I would like to add. According to me, I think we should set an examples of other companies. We should set an example by other companies that these companies have done these things regarding EVs. Set an example that as far as we have discussed about the पॉलिसी निकाली हुई थी 2015 में यूज कर सकते हैं. लाइक आप बंगाल में देख सकते हैं, बंगाल में क्या होता है कि बस के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी का लाइन होता है, जैसे ट्रेन होता है ना, वो सिस्टम बस में भी किया गया है. बंगाल में आप बंगाल गए होंगे तो ये चीज ऑब्जर्व किए होंगे. जरूरी नहीं कि आपको लिथियम बैटरी को यूज करके ये जो भी लिथियम बैटरी और कोबाल्ट आयन बैटरी की बात कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसीज निकाली हुई है, जैसे कि एक फेम पॉलिसीज निकाली हुई है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, जिसमें कि पूरी कंट्रीज मतलब नॉट ओनली इंडिया, सारी कंट्रीज के जो भी R&D रिसर्चर्स हैं उन सबको इनवाइट किया हुआ है और उनको मतलब कैसे इम्प्रूव की जा सकती है. तो गवर्नमेंट ने Okay, now listen to me carefully. What I will come to each one of you. See, the topic was अगर मैं तुम्हें टॉपिक देता why e-vehicle should be used, तो आप कैसे अलग डिस्कस करते ये बताओ. The topic would have been why you should use e-vehicle, why e-vehicles are better. The topic was how to convince the customer. टॉपिक वो है. तुम लोग डेविएशन मार रहे हो बहुत ज्यादा, टॉपिक के आसपास नहीं हो तुम ई व्हीकल की प्रेज कर रहे हो. अब मैं एक एक के पास आ रहा हूँ, सोचो 2 मिनट दे रहा हूँ, आपने मेरे को एक एक पॉइंट बताना है बस.
हाउ शैल यू कन्विंस द कस्टमर फॉर ई व्हीकल। मेरे को ई व्हीकल को खरीदना है, तुम लोग मार्केटिंग के लिए हायर कर रहा हूं तुम्हें मैं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे को डिफरेंस बताओ ई व्हीकल और कन्वेंशनल व्हीकल का। मार्केटिंग में तुम्हें बेचना है प्रोडक्ट, कोई कन्विंसिंग पॉइंट बताओ यार, मार्केटिंग के लिए ले सकूं तुम लोगों को। कन्विंसिंग पॉइंट बताओ कि आपको ई व्हीकल लेने से ये बेनिफिट होगा, आपको इसलिए लेना चाहिए। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं एक एक के पास आ रहा हूं, एक ही पॉइंट बताना है आपने मेरे को, बस ओनली वन पॉइंट कि हाउ विल यू कन्विंस द कस्टमर, एंड दैट विल बी द समरी फॉर एंटायर। और आपको पता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि किस किस पॉइंट पे बेचोगे आप। हिंदी में बताओ, इंग्लिश में, एनीथिंग यू कैन टेल मी, बट हाउ शैल यू कन्विंस इज द वर्ड। In the marketing, it is very important thing. How shall you convince the customer? And there are so many points which you have told. Okay, so I think I will start now from Tushar. Tushar, only one point. Sir, I want to say that government has provided a compensation of 1.5 lakhs to the e-vehicles. Means e-vehicles जो buyers है, so it would be beneficial by seeing the monetary benefits, and also the registration cost and the running cost is also less Only one as point. well as Only one point. So your point is 1.5 lakh रुपया कम मिलेगा, सस्ता मिलेगा। So yes, आपने sir. ओवरऑल As कॉस्ट well as कंपेयर किया है ई व्हीकल और दूसरे व्हीकल का? सर e-vehicles is सर e-vehicles का जो कॉस्ट है वो थोड़ा लेस रहता है as compared to petrol vehicles, and sir the second reason is that जो GST उस पे लगता है सर वो भी लेस रहता है as compared to petrol vehicles सर। ठीक है, ये पॉइंट कन्विंसिंग के लिए ठीक लग रहा है। अभी आगे चलते हैं अजीत की तरफ। अजीत बताइए। यस सर। सर मुझे लगता है रिचार्जेबल बैटरी, मैं उसको डिफेंस करना चाहता हूँ कि रिचार्जेबल बैटरी होता है ना सही व्हीकल में सर, एक तो लो कॉस्ट होता है सर, ऊपर से मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है सर, फिर रनिंग कॉस्ट कम लगता है सर, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट, सारे पॉइंट आप कंक्लूड मत कीजिए ना, उसी से है सर रिलेटेड, उसी से जो इन्वेस्ट, जैसे क्या होता है सर पेट्रोल वाला यूज करते हैं तो हमको पेट्रोल पे पैसा लगाना है, लेकिन इसमें बैटरी से रिलेटेड है कि हमें इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मनी नहीं करना पड़ेगा। मतलब लाइक रिचार्जेबल आएगी। यस सर, बैटरी सिस्टम में आपको इन्वेस्ट एडिशनल पैसा आपको खर्चा उस पर नहीं करना पड़ेगा, और रनिंग कॉस्ट कम है, और वही लो कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे को समझ आ गया, लो रनिंग कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं शिवांगी। Sir, it is low running cost, and also government has initiated incentives for its for selling its promotion. So incentive means similar to what Tushar said, 1.5 lakh, right? Yes, yes. So and yes, sir, 1.5 lakhs, and also insurance benefits as well. Is there any insurance benefit? Are you sure about that, Shivangi? I'm not sure, but as it was discussed in the group discussion, so if you give me good insurance, without insurance I'm going to purchase that, but you need to make sure that it is insurance benefit is coming. So if not sure, then we cannot convince, झूठ तो नहीं बोल सकते customer को, right? So okay, Mayank, over to you. Yes sir, thank you sir. सर मेरा जो पॉइंट है वो है सर, एक तो हाई चार्जिंग टाइम लगता है। लेट्स से कि सर हमें कोई 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो एट प्रेजेंट अराउंड 70,000 फ्यूल स्टेशन है इंडिया में, जबकि सर ओनली 3,000 ही इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन है। तो सर अगर मैं लेट्स से कि किसी हाईवे पर जा रहा हूँ, तो हाईवे पर अगर मेरी गाड़ी का ये जैसे जो भी बैटरी है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो इतने इलेक्ट्रिक स्टेशन प्रोवाइड नहीं है। तो मिनिमम सर मुझे जो चार्जिंग टाइम लगता है वो अराउंड 30 मिनट्स टू 12 आवर लगता है। तो मैं ये कन्विंस करूंगा उन्हें कि ये जो चार्जिंग टाइम है इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज अभी लाई हुई है रिसेंटली, ड्राफ्ट में जून 2022 में रिसेंटली अनाउंस किया था। तो सर इसके थ्रू मैं कन्विंस करने का ट्राई कस्टमर बोलेगा कि जब 70,000 पेट्रोल पंप है तो मैं जाऊं क्यों इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ, तुम तो उसको ये बोल रहे हो भाई मत खरीद।
तुम उसको पहले सारी स्टोरी बता रहे हो कि 70,000 पेट्रोल पंप है, चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो जिसने खरीदना भी वो मन बना के आया है कि मैं खरीदूंगा आज, तो तुम मैं कैसे सेल्स पर्सन हो, तुम बोलोगे भाई मत खरीद, तो तुम उसको कन्विंस कहाँ किए, तुम तो उसको ना खरीदने के लिए कन्विंस कर दिए। गवर्नमेंट पॉइंट, उसके दिमाग में तो एक प्रॉब्लम पॉइंट था ही नहीं कि कितने 70,000 पेट्रोल पंप है और पता नहीं कितने तुमने नंबर दिया है, तो वो तो वैसे नहीं खरीदेगा मैं। अब ये वो पॉइंट्स होते हैं जो बड़े ध्यान से सुनता है, बोलेगा ये मार्केटिंग वाला बंदा तो यार क्या बेचेगा, तुम्हारा नेगेटिव चला गया नंबर इसमें। अमितेश बोलो। So, according to me, running cost is low, maintenance cost is low. Then, sir, pollution documents will be not required because maintenance cost low, that I understood. So that is a new point. Only one point I'll take from you. Maintenance one more cost point. is low. Yeah, sir. One more point. Comfortable drive. So, so I don't want more point from you, Amitesh. Let others also speak. Okay. Are you? Can you convince me on low maintenance cost? इस point के ऊपर convince कर सकते हो मेरे को? सर अकॉर्डिंग टू मी सर मूविंग पार्ट्स कम है, तो मूविंग पार्ट्स जब कम होते हैं तो सर उसमें जो मूविंग पार्ट्स कम होंगे तो मतलब उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि जैसे अभी मेंटेनेंस कॉस्ट होता है कि मेरे को 6 महीने के बाद सर्विस करवानी पड़ती है गाड़ी की, या मेरा इंजन जो है वो डैमेज हो जाता है, तो हाँ सर वो एक्चुअली जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग इंजन वगैरह हो गया, ग्रीस वगैरह ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो सब में अगर मूविंग पार्ट जैसे कम हो जाए, जैसे कि ईवी में हो गया कि आपका फोटो में जो बैटरीज वगैरह हो गया या फिर जो, तो उसमें सर मूविंग पार्ट्स नहीं कम होते हैं, इस वजह से उसमें मेंटेनेंस कम है। समझ आ गया। भूपेंद्र आगे बताए आप। भूपेंद्र। यस सर, इजी टू ड्राइव एंड लाइक कंफर्टेबल है कि इजी और कंफर्ट से क्या मतलब है, मतलब क्यों इजी है ड्राइव करना? हाँ जी सर, एक तो जो इसमें कोई गियर सिस्टम जो होता है उसकी जरूरत नहीं है, विच इज लाइक अभी जो गियर लेस तो दूसरे भी आते हैं पेट्रोल के। हाँ जी सर, और दूसरा जो है एक नॉइज का जो होता है, दिस डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नॉइज, तो जो भी अंदर नॉइज लेस, यस सर, नॉइज एंड वाइब्रेशन जो भी होता है, सो अंदर कुछ वो नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट ऋषिका। Sir, it prolongs life of the engine. It has a more life of the engine, sir. इंजन की लाइफ ज्यादा है, वो क्यों? सर क्योंकि वो मतलब इट्स लेस CO2 emissions जनरेट करता है और SOx NOx भी लेस emit करेगा, like it's very negligible. इंजन लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वैसे तो, लेकिन आई थिंक आई टुक योर पॉइंट। नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी 10-15 साल चलती है, उतरे डीजल गाड़ी 10 साल चलेगी, पेट्रोल 15 चलेगी, तो ये कितना चलती होगी, कुछ आइडिया ऋषिका? यू हैव सम आइडिया? और like it has low maintenance and has prolonged life of an ठीक है। सुरेंद्र आप बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि हमें उसे सेल करना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम वो जो है वो गाड़ी को चलाने वाला है, तो उसको हमें इस तरीके से बताना चाहिए कि तुम उसको यूज करोगे तो तुम्हारी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इस पॉइंट पे मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। मेनली क्या है ना कि लोग जो है वो कॉस्ट को सबसे पहले देखते हैं, तो मेरा कन्विंसिंग पॉइंट उसके लिए कॉस्ट के थ्रू ही रहेगा कि मैं उसको कॉस्ट के थ्रू ही उसको कन्विंस करने की कोशिश करूं। यस पवन। Sir, I think the earth is getting. So first, I will like convince him with the social responsibility as a citizen. So I will. It's earth is getting warmer, and I'll convince him we have to shift towards electric vehicle. And second is that more than the petrol or diesel vehicles, electric vehicles can provide more automatization. Like automatic controls can be provided more in electric vehicles when compared to that one. And okay, yes, now. Petrol can give you to sorry sir. Understood Pawan. Your point, social responsibility on the basis of that pollution and all, you can save environment, right? Okay, Soham, your point. Sir, my point will be, sir, every car needs to be financed through a bank or bank loan, because everybody when we need a car, then car loan should be there. So finance cost will be lower, because when we purchase an e-vehicle, the rate of interest is lower 50 basis point or 75 basis point in any bank. So finance cost will be lower. Apart from that, sir, in terms of commercial vehicle, which penetration is much more higher than passenger vehicle, logistic cost will be very less, because
in commercial vehicle, the commercial vehicle have to run thousands of kilometers. So as the kilometer cost will be reduced to very low, so logistic cost will be very low. So that will be my point. Rupesh, have you told? Yes, sir. सर रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था, जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आग लगी थी, तो उससे कस्टमर हो सकता है वो पैनिक हो सकते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली जो टेस्टिंग सर्टिफिकेट है उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वी ऑलरेडी टेस्टेड दिस व्हीकल फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। सो जो ISO स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट्स है वो उनको दिखा के कन्विंस कर सकते हैं कि वी ऑलरेडी टेस्टेड दिस व्हीकल फॉर सच इंसिडेंट्स। Ras, unmute yourself. Unmute yourself, Ras. Unmute. Okay, anybody else is left? Sir, can I add one more point? Amitesh, sir. Yes, Amitesh, go. Yes, sir. मेरा ये sir. Okay, Ras, go ahead. Ras, go ahead. स्मूथ रनिंग और लेस में प्रॉब्लम होगा। जो मेंटेनेंस बार बार करा पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये प्रॉब्लम थोड़ी देर के बाद आएगी या मे भी बहुत देर के बाद है। क्योंकि सर जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल में रेसिप्रोकेटिंग पार्ट जो होता है सिलेंडर में इंजन का वो ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन और टेम्परेचर की वजह से हमें जल्दी जल्दी मेंटेनेंस कराना पड़ता है। ओके, डन। या अमितेश, you are giving some point. Yes, sir. Like Tata Motors and can be given certificate of made in India part, means made in India project. So the sentiments can help them. Okay, sentiment make in India वाला. Yeah, make in India. सर एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। Yes, yes. सर मुझे लगता है कि हमें कस्टमर को कन्विंस करने के लिए बोलना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल फ्यूचर में बंद होने वाली है, बैन होने वाली है, और ऊपर से ये कहना पड़ेगा कि क्योंकि अगर दिल्ली जैसी टाउन में पॉपुलेशन और प्लांट का भी बहुत कम गया है, तो सर वो ये भी समझाना पड़ेगा कि सोशल और पोल्यूशन और ये है कि नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगी तो आपका फ्यूचर का रिक्वायरमेंट कम जाएगा। अभी लो कॉस्ट है, तो प्लीज आप अभी इसको खरीदें। अब तुम मार्केटिंग के तरीके से सोच रहे हो। हाँ सर, one point will be there, resale value will be more because in future IC engine will be obsolete, so EV will be dominate the world, so resale value will be there. If we take IC engine car, there will be no resale value as such, scrap value. This is called fear motivation. Yes. No, you give the milk to snake so that it should not bite you. तो तुम डर के उसको पूजा करते हो, उसकी शनि भगवान के नाम पे। सैटरडे को have you seen people coming for शनि and then you are giving money to this thing? So there is a fear motive कि मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए. So fear motive is the best motive. Maybe you can use it other places also. If you tell a person like Ajit said, do you know that after 5 years, even if you take a new petrol pump, sir, and if you take a new petrol car, it is going to be out of the road. So you are purchasing a new petrol car only for 5 years. Here it is e-vehicle for next 20 years, and government is going to give you this thing also, benefits also on that. So ये fear motive है कि तुम उसको डरा ही दो कि जो दूसरी गाड़ी है वो निकल जाएगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जब तुम ऐसा बोलो तो झूठ नहीं बोल सकते, ये मार्केटिंग एथिक्स के अगेंस्ट आ जाएगा। तुम उतना ही उसको डराओ जो फैक्ट के बेस पे है कि सर यू शुड बी अवेयर कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आएंगी जिसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो वो बैन कर देंगे, पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चलेगी नहीं। तो अभी जो लोग नई पेट्रोल और गाड़ी की ले भी रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, इफ यू आर परचेजिंग, you are going to make a blunder because after 5 years what you will do? Nobody else will purchase it. Resale value इसका होगा नहीं, तो क्या करेंगे आप? And I tell you, the customer will be afraid. Fear motive works like anything. It is works like anything. कि भाई ये लास्ट ईयर ले लो इसको, लास्ट पीस खत्म, उसका कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, लो, तो बंदा उठा लेगा उसको. And that works. That is a good point actually. So now I must say that you people at the end gave me the really good points about convincing the customer. Some of you said like but even environment के लिए भी like some people, you know, like Pawan said, some people can be motivated on the basis of environment also, that for environment pollution, but you know, people see their self interest first, at least in India they don't bother about environment.
you know what actually should be. First you should focus on environment, then your organization, then your society, and then your organization, and then your community, and then you. But it goes reverse in India. First you focus about you, then your community, then your society, then organization, and then environment is at the last, if at all I am to bother. So if somebody say take this, this is only 2 lakh rupees costly, but you know it will help environment a lot, people may not get convinced for one. But yes, you as a marketing executive will certainly tell some people, because there will be some people, no doubt about that. So understand one thing as a marketing executive, that you are to use the marketing stunt as per the customer. Fear motive may not work on a very intellectual customer, because he may not accept that. He may give you some logic and then it may not work. So usko aap convince karwa sakte ho on the basis of the environment, something like that. Or maybe a kid has come, parents with kids have come. Sir, please think of these kids. You purchase e-vehicle, they will live their life in the clean environment. So if you take e-vehicle today, you will be doing so good to your kids, sir. So please take it. So you need to sell, you know, something like that. You need to sell your product on the basis of that. Now you've given the points. I don't know, Rishika mentioned about demo, that she will give demo, vehicles can all. Yeah, that was a good point. I mean, sir, please have a demo first. Whatever doubts you have, you just have a demo and see. There will not be any noise. It will look like you are not even driving. It is so smooth experience. So whatever you are saying, smoothness or noiseless operation, motivate them for a demo. You will motivate them to take a demo, and a long drive you go, and then you check yourself how comfortable that vehicle is. Then low running cost, you said government is going to give you 1.5 lakh. I don't know, Soham mentioned about, I think bank is going to give you 75 paisa low loan rate. I don't know, that is the fact or Soham has created it. I don't know, but if that is there, then it is also a good point. I mean, you will get a cheap loan. So sir, see, this is the loan, you can get a cheap loan. That is also the point. Yes, sir, that is there. That is there, good. So long life will be there. Yes, petrol car you take, sir, it is for 10 years. This you take, sir, it is for 17 years or 20 years, whatever you want to say. So wear and tear of the tires, sir, you need to replace your tire after 40,000 kilometers. A new tire is coming 10,000 rupees. With e-vehicle, sir, your tire is going to last long. You have to replace it after 60,000. That means you are saving money there also. Running cost is almost nothing. Running cost is good. So in points pay, you have to sell that particular product. So the topic was convincing your customer, and it's a totally marketing topic. It was not R&D topic. It was not technical topic. It was a marketing topic. You should have some points and then you have to market it. So they would seek for the marketing executives. Sir, one point. हाँ. सर मुझे कस्टमर को अगर कन्विंस करना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप सबसे ज्यादा व्हीकल पर आप ही रह सकते हैं, तो आपका भी अपना हेल्थ, सबसे पहले तो अपना हेल्थ केयर कीजिएगा, तभी तो फैमिली को कीजिएगा। क्योंकि आज कोविड के बाद से लाइफ लोगों को बहुत शॉर्ट हो चुका है, 50 से 60 एज हो चुका है। तो अगर आप पेट्रोल डीजल का यूज किए हुए व्हीकल का यूज कीजिएगा तो आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, तो फैमिली को आप कैसे रिक्वायरमेंट को पूरा या जरूरत को कर लेगा। तो अजीत करेगा मार्केटिंग, आई एम श्योर। They should positively take you. सर एक ये चीज भी बोल सकते हैं, सोशल स्टेटस यूनिकनेस का। Yes, obviously. I mean, you are doing good for the nation. You are doing good for the country by doing that. It reflects that actually you are doing good for the country. Something if you are taking this decision. Now, let me tell you, there were some of you who were obstructing the discussion, and he may eliminate you despite of your good participation. And that is Tushar, Ajit, and Soham. So you people were speaking a lot and you were not listening to others. So I am sure when actual GT takes place, please you should show that you are listening to others also. Ajit, Tushar, and Soham. GT के लिए you are okay, but GT के लिए it may be against you. So मैंने आपको पहले भी फीडबैक दिया तीनों को कि तुम दूसरों की सुनना भी स्टार्ट करो। वहां पे ऐसा ट्रबल नहीं आएगा, वहां पे आपके लोग बात सुनेंगे, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा शो करना कि यू आर लिसनिंग टू अदर्स आल्सो, उनके पॉइंट भी आप ले रहे हो। एंटायर ग्रुप का मेरा जो फीडबैक है वो ये, you did not participate as a GT because you were not making a consensus, you were not making a points, you were not jotting down the points, you were not going towards a conclusion like okay friends this point we can now write, can we do that, ऐसा करना स्टार्ट करो आप में से कोई भी बीच में। okay friends this is a very good point, so can we write that now low maintenance cost is there, and the kind of question which I asked you, you can also ask
Okay, Soham, you are saying that loan is cheap. Are you sure about that, Soham, that 75 paisa is cheap? Yes, I know this 75 paisa cheap. Okay, so we write low cheap loan also we are going to get it. Okay, friends, we have got now 4 points. Any other point, friend, who is want to give it? So that way you will ensure a conclusion for you, because you will get the chance for conclusion in that case. So something like that. Sir, यहाँ पे सर यहाँ पे कोई बोलने दे नहीं रहा है, लग रहा है जीडी है, मच्छी बाजार बना रखे हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं ऐसे सर। हाँ, हड़काओ इनको, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन तुम लोग पार्टिसिपेट करो एंड यू पार्टिसिपेट मोर, आई मीन दैट विल हेल्प यू। एंड पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे हैं, लग रहा है बोले जा रहे हैं, सुनना भी तो चाहिए इनको। हाँ, they are shameless people. So you this is a big group actually, 12 people group. There you will get group of 7-8 students. वहाँ पे राज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, but you start speaking. Like Rishika started speaking now, Shivangi spoke, so they have started speaking now, they are participating, don't worry. Tushar is speaking. Tushar in the beginning, first GD, if you listen to Tushar was, you know, a silent creature, so I thought he will never speak, he'll never speak in his life. So now Tushar can enter easily. This comes with the practice, I tell you, Raj. So आप practice करो, don't worry. वहाँ पे नहीं problem आएगी, यहाँ पे जितना तुम्हें मच्छी डालना डालो, don't worry. But you speak and you speak sense here. There you will come out with the points for sure. That will happen there. So that won't be trouble. Yes, sir, I will note all the point by everyone, but I am not able to deliver because there is no any room. If that case comes and if you feel that you are actually, you know, there was one of my teacher who used to say that suppose there is a question essay which is to be written in 5 pages and all your knowledge is only worth 1 page. After 1 page you cannot write. Do one thing, keep writing the same 1 page in 5 pages, because there will be teachers who will only count the pages. Okay, good, and you will sign it. So at least fill the pages. So if you find that you have no new point, but still you are to participate, you just repeat what somebody has said long back. So just speak in a different way, but don't be mute, because if you don't speak, 100% you are out. वो पक्की बात है, तुम बाहर हो। तो आपको बोलना तो भाई है ही, चाहे अच्छा बुरा कुछ भी बोलना है, बोलना बहुत जरूरी है। ना बोलना तो बाहर हो स्ट्रेट, फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। फिर अच्छा नहीं बोलोगे, पहले कुछ भी बोलोगे, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू मेक सेंस, स्टार्ट मेकिंग सेंस. And if you start listening to others, if you start speaking, if you just repeat the topic, and what was the topic? How shall you convince the customer? Suppose you use this word. So friends, to convince the customer, I think we should also tell them that if you use this sentence, then you know what, like search engine optimization, which you know Google looks for, that observer के mind में जाएगा, this fellow is talking relevant to the topic. Why? Because you are speaking about the topic again and again. So friends, don't you think to convince the customer we should do this? So use this word to convince the customer we should do this. तो आप कुछ कैच पॉइंट्स पकड़ो जो ऑब्जर्वर सुनता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द टॉपिक. So others will deviate, but you just come back to the topic again and again, come back to the topic and keep speaking something. So उससे तुम पास हो जाओगे, और हमारा पर्पस है उसको पास करना and to get the score in that. These are some rules. This is what you have to follow, right? Yes sir. बाकी आपको जैसे एक पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा अबाउट ऋषिका. ऋषिका was trying to discipline others first and then to stop Ajit. Ajit was unstoppable and Rishika said, okay, I think we should give chance to Shivangi. She said that forcefully, and then Ajit stopped and Shivangi was given a chance. So why I'm telling you this is, suppose you find some student is not listening, he's just speaking. Now how to stop him? Either you say, Ajit, please stop. That is not a right way to stop him. You said, okay, Ajit, that is a very good point. Ajit, can we give chance to now Shivangi also? Ajit, I think we should give chance to Shivangi also. That way you are not playing a role of observer, you are not playing a role of coordinator, you are a team member. So behave as a team member, not as coordinator. So you are not to discipline anyone. To discipline anyone, there is a way. And the way is, okay, right, Pavan, we have noted your point. That is a valid point. Pavan, I think we should take a good point from Amitesh also. Amitesh, yes, please. Amitesh, what is your point? Okay, let's Amitesh speak. That way you have to stop somebody. And that is how they will stop. Ask question. Friends, don't you think the topic is how to convince? I think we are debating from the topic. The topic is how to convince. So you start, like Bhupender mentioned, we must actually tell what is the benefit to the customer. Bhupender said that once in between, and that I listened because you were deviating that time.
So marks goes to him. These are some of the points you say. And अगर आपको लग रहा है कि आप ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं, that is wrong. There are 3-4 people sitting, they are observing you very meticulously. So जो भी तुम बोलोगे वो सुनेंगे, उसका तुम्हें मार्क्स मिलेगा. इस तरीके से तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, राइट? Done it? Yes. किन का है जो very close, किसका आ रहा है अभी GD/GT? Very close. 28. 28 sir. 28 तो 28 परसों कल है, right? So if you want to participate in the morning 9 o'clock, those who are very close, they can come 9 o'clock in the morning also. There is a GD, right? I have not put that in the group. So those of you who have very close date, let's say 28, 29, जिनका September में है, they please come in the morning if they can come. 9 o'clock we have GD, right? चलो we ended up the कल शाम को होने वाला है क्या GD? शाम को है. शाम को मल्टीपल शाम को ज्वाइन हो गया. ओके, yes, शाम को ज्वाइन. Okay, see you tomorrow. Thank you.